Assalamu alaikum. Thank you so much for including me in this important work, and especially Dr. Noman Ashraf for such an informative presentation and setting up the stage. Thank you, Dr. Maksud, Dr. Dogar, and everybody else who's doing this, Mohammad Zishan, everyone else involved in this amazing work being done in Pakistan. I'm also a proud Liaquatian, and we all trying to copy Nishtar. But for right now, we will stay Liaquatians and Pakistanis. Building on what Dr. Noman Ashraf has already talked about, I want to start with, so let me just. So I know we, coming from Pakistan, where religion is very important part of our identity, our lifestyles, I think I want to start with the religious model first. And to say that yes, Islam is the dominant religion, but of course we have other religions being practiced in Pakistan as well. But what I've seen is that this faith model and the presentation of addiction in faith communities is very similar. But today I'm focusing on basically the Islamic model. So what we see is that Islam is one religion which puts very important, puts emphasis on your mental competency and clarity. So we see this in Maqsad Sharia, that as it's important to preserve your faith, your life, your property, your children, it is important to preserve your akal, your intellect. And you will see all the practices in Islam are promoting this mental wellness as much as physical wellness. So that's the piece I want to bring in towards coping skills today. That how do we protect and promote this intellect? So Islamic law seeks to protect the belief in Allah by promoting life and the maintenance of property and maintenance of a healthy state of mind. So anything that takes you away from this mental clarity was prohibited. In the same spirit, if your mental competence was not intact, you were considered a majnoon. You were exempted from all duties and you became responsibility of the state. So others had to take care of you. But if you are mentally competent, then you had to safeguard and take care of this mental clarity and competency. And so anything that was addictive, so the word for addiction is khimr, anything that was addictive was prohibited. But in the same spirit, any intense emotion, anger was prohibited. Any extreme behavior that takes you away from this mental clarity was prohibited. So in spirit and in law, what we see is that addiction is discouraged. Not only what you are taking in form of substances, but how much are you eating? How much are you spending? How much are you indulging in fun activities? Everything was brought back to moderation. And what was the end goal? To keep your mental clarity so that you can make well decisions for yourself, for your family, for your community. So this I talked about already. So it's interesting that right away, it wasn't like what we see historically, that even the Sahaba close to Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, even the Sahaba close to him were drinking heavily. So they didn't just come out and said suddenly that alcohol is prohibited or haram. It took them 17 years to prohibit alcohol. And I think that's a lesson for us to understand that if someone is using, even someone who were right there doing this amazing work for Islam and practicing, promoting and protecting Prophet, they were still indulging in substances, and it took them a lot of patience
to get rid of these habits. So I think that is an important piece to remember. It took them 3 stages to prohibit alcohol. Like initially it was said that it's better not to use because gambling and alcohol take your mental clarity, or you are indulging in behaviors that can be detrimental to you. Initially that concept was introduced, but then they said, don't pray while you are drunk, because there was one incident that one of the Sahaba, while drunk, did not lead the prayer correctly. So then came the words that don't pray while you are drunk. So what did people started doing? They started drinking after Isha till Fajr, they would drink. But then there was a big tribal clash between 2 tribes after Isha prayer because they were drinking. So then the final prohibition came that it is haram. Don't drink alcohol. It is bad for you. But it took almost 17 years to do that. So at that time, we do see incidences of some mention of khamr, addictive substances, and then alcohol. But that, unfortunately, at that point, we didn't have like opiate or marijuana or all the drugs that we are seeing now. They were introduced later on as the trade increased. People started bringing these products and substances to different parts of the world. And what we see is that it's very later, after Prophet, very later, that the scholars, Islamic scholars, started realizing the detrimental impact these substances were having on the mental, physical, and economical health of the community, that they started prohibiting it. So yes, you will see a lot of people will go and say, these are not prohibited in Quran, so why should we stop, right? So that's the historical narrative, that they took the model of khamr and any addictive substances and alcohol, and then slowly, gradually started talking about the other substances. On the other hand, what we see that historically, it was thought that hashish helps you meditate. So a lot of spiritual like practices had hashish part of it, right? And we see this problem even in Pakistan now, that a lot of these drugs are being used where these saints shrines are, or where these spiritual practices are. People started combining the two. And then, of course, again, the legal law started coming in Islamic law. It started calling it marzi rohani, like a spiritual disease. So on one hand, you had people using it to heighten their spiritual experiences. And on the other hand, then this kind of awareness had to be created, that this is actually affecting your ability to connect to God. So it diminishes the powers of soul. This is from a religious text, from a legal document that I took out, that it diminishes the powers of the soul, destruction of the mind, forgetfulness, vulgarization of secrets, commission of evil action, loss of modesty. So then they started talking about it, that using is keeping company with the devil, omission of prayer, and falling into unlawful activities. So we had to bring that slow, gradual shift into the how the society's relationship to these substances changed. So Dr. Nouman Ashraf touched base on some of the models, and I'm going to talk about that because that's important to understand before we go to the coping. So there are a few things that I see in faith-based communities, and this is very prevalent in all religious communities that I work with. One thing is shame-based culture, right? So yes, the fear that what are others going to say? You know, especially हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी में ये बहुत होता है कि वो आंटी देख लेंगी, वो अंकल देख लेंगे, क्या बोलेंगे, छुपाओ. Shame-based culture can be very good in the sense that if you
are that connected to the community and you value the opinion, it might stop you from using. But we also see the negative side of it, that this fear ke log kya kahenge, we tend to then start hiding things. So we might be using, but we try and hide it. And ye jo hiding hoti hai, ye shame hoti hai, ye stigma hoti hai, that's the biggest barrier in timely access of care. And इसीलिए हमें as community, we will have to understand that this shame-based culture can be used positively, but for that to happen, we will have to be very non-judgmental, accepting and encouraging people from all walks, from all kind of people who are indulging in these behaviors. We have to bring them into our fold, include them. इन्हें हमें शामिल करना पड़ेगा, उन्हें validate करना पड़ेगा instead of being judgmental. Other thing I see in the faith-based community is guilt, right? Allah miyan kya kahenge, ya whatever like religion you practice, ke answerability to God, ke mujhe kal ko I'm committing a sin against God. So that fear. But again, this religiosity, what we see is very positively associated with prevention of the use, but only in cases where the religious community is supportive of and validating your disease, validating your behaviors, and then helping you navigate your path to the treatment. अगर हम judgmental होने लगेंगे, हम negate करने लगेंगे, हम खुद लोगों के बारे में बुरा कहने लगेंगे, तो that is not gonna be helpful. Again, पिछली presentation में we talked about the moral model, and addiction is not a spiritual failure, right? We have to move away from sin and कि ये गुनाह है, जहन्नम में जाएंगे, instead of talking about that model that it's a spiritual failure, हमें trauma informed model लाना पड़ेगा जो that mentions कि you never go to a person and say what is wrong with you, क्या मसला है तुम्हारा, क्यों ऐसे कर रहे हो. Instead, we have to change our narrative to what wrong happened to you, कि हुआ क्या कि you started, instead of going and using healthy coping skills, that you have started using drugs. And वो risk factors, जैसे पिछली presentation में Dr. Noman Ashraf ने बताया कि not having support, not having good parenting, not having community context, or not having religious connection, positive relationships, that also plays such an important part in your healing. So moral model से हमें हटना पड़ेगा कि ये जैसे thinking कि ये this is like a failure of your will, यानी तुम में नहीं है, हिम्मत नहीं है, तुम में कोई मसला है, तुम्हारा स्टेमिना नहीं है, you are wrong. ये जो चीजें होती हैं, ये स्टार्ट में ही आपका कनेक्शन ब्रेक कर देंगी और वो इंसान कभी फिर आगे बढ़ के एफर्ट नहीं करेगा टू चेंज. हम ये मोहम्मद ज़ीशान चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट हैं, वो आपको मे बी ही विल टॉक अबाउट इट, कि हम कहते हैं थेरेपी में कि कैच द चाइल्ड डूइंग गुड. अगर अपने बच्चे को आपने कोई बात समझानी है तो आप उस वक्त समझाएं जब वो खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है, आपके साथ आके गोद में बैठा हुआ है. Those are the moments. Catch them doing good, and you always start with the positive compliment or comment कि बेटा आपने आज कितना अच्छा किया, and then slowly you bring them to the point that you want to give them. अगर कोई बच्चा already bad behavior कर रहा है, tantrum throw कर रहा है, उस वक्त आप जाके बोलोगे क्या खबरदार ये नहीं करो और इस तरह नहीं होता है और तुम गलत हो, that child will not understand. तो आपको de-escalate करके इंसान को उस लेवल पे लाना है कि वो आप ओपन हो, आप पे ट्रस्ट करे, आपके साथ सेफ फील करे और आपकी बात सुनने को तैयार हो. ये डिजीज मॉडल जैसे हमने देखा कि हमारा एक रिवॉर्ड सिस्टम है ब्रेन में, जो पूरा ट्रैक्ट अभी उन्होंने समझाया. रिवॉर्ड सिस्टम है,
جو ڈوپامین ریلیز کرتا ہے, اور اگر وہ ڈوپامین نہیں ریلیز ہو رہی تو انسان ڈھونڈتا ہے چیزیں, بہانے, طریقے کہ میں کیسے فائنڈنگ اے گڈ سیل فار وومن ان پاکستان. آئی ہیو سین ایک دفعہ میں غلطی سے تھی اسلام آباد میں آن اے سیل ڈے, اور او مائی گاڈ, دیٹ واز ون آف دا موسٹ اسکیری ایکسپیرئنس آف مائی لائف, کہ ہاؤ ڈیسنٹ, بڑی ڈیسنٹ elegantly dressed women, how they went crazy over those clothes, right? But anything that kind of gives you that pleasure, right? So another thing I think ہمیں بڑا ضروری ہے سمجھنا اور سمجھانا کہ ڈوپامین اگر آپ کے پاس کم ہے تو you go towards pleasure seeking ways, کہ وہ instant ہمیں چاہیے, اور ہمیں encourage کرنا ہے peace seeking. So pleasure اور peace are two different things. Pleasure بڑا short term ہوتا ہے, جیسے آپ نے ایک برگر کھایا, فاسٹ فوڈ کھایا, تھوڑی دیر کو آپ کو اچھا فیل ہوا, پھر وہ فیلنگ ختم ہو گئی. What we want is long term cultivating peace. How do you bring yourself to that level of contentment and peace? And that's what I'm going to talk about. So یہ Alcoholic Anonymous جو امریکہ میں ہے, اس کا یہاں پہ ملت اسلامی, آئی تھنک انڈونیشیا اینڈ ملیشیا میں یہ ماڈل بنا ہے, بیسڈ آن ہاؤ کین وی یوز دس ماڈلز آف شیم اینڈ مورل disease, and then have people use religion to cope with their addiction. آپ یہ میرے آپ کے پاس سلائیڈ ہوگی, آپ پڑھ لیجئے گا. میں بیسکلی ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم ایڈکشن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سمجھنا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ کوئی کیوں یوز کرتا ہے, what predisposes them, what is their vulnerability, کیوں ہے اب تک وہ ڈپینڈنٹ آن دیز ڈرگس, ان کا ریلیشن شپ کیا ہے خدا سے, کمیونٹی سے, ان کا لیول آف میڈیٹیشن, ریلیجیوسٹی سے اچھا ہے, سورس آف اسٹرینتھ ہے یا ڈسٹریس ہے, اور پھر اویلیبلٹی کہاں سے آ رہی ہے, کون دے رہا ہے, کہاں سے لے رہے ہیں, پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. all these aspects we have to take in consideration. بٹ میں جو مجھے بات امیز کرتی ہے بہت زیادہ ایز اے سائیکائٹرسٹ رائٹ ناؤ, ایز اے مینٹل ہیلتھ پرووائڈر, کہ جو ہم اس وقت ویسٹرن ماڈلس یوز کر رہے ہیں ان کا بیسس بڑا ہمارے اپنے ریلیجن میں ہے. بیکاز وی نو دیٹ سائیکائٹری کے جو فاؤنڈنگ سائیکالوجسٹ اور وہ تھے, اسکالرس تھے, وہ اسلامک اسکالرس تھے. ایون پہلا اسلامک پہلا مینٹل ہیلتھ ہاسپٹل بھی بغداد میں بنا. اینڈ اٹس امیزنگ کہ جس کو ہم اب DSM-5 کہتے ہیں, وہ ابن سینا اور بلخی بہت سے اسکالرز ہیں, انہوں نے آلریڈی یہ بیماریاں ڈسکرائب کی ہوئی ہیں, کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی ڈسکرائب کی ہوئی ہے. تو اب ہم انہی ماڈلس کو یوز کر رہے ہیں جو ہمارے پاس آلریڈی اویلیبل تھے. سو یہ تین کانسیپٹ ہیں جو میں اسلام میں تو بہت انگرینڈ دیکھتی ہوں, لیکن ان آل فیتھ کمیونٹیز آئی سی دس, کہ سینس آف ویلنس از ویری امپورٹنٹ. ہر چیز شروع ہوتی ہے آپ کی اپنی ویلنس سے, اس کے بعد آپ ویل ہیں تو دین یو ول ہیو ہیلدی ریلیشن شپس, پھر وہ ہیلدی فیملیز ہوں گی, پھر وہ ہیلدی کمیونٹی بنے گی, پھر ہیلدی سوسائٹی بنے گی, تو وہ ویلنس بڑھتی جاتی ہے. اور جیسے جیسے ویلنس آپ سے دوسرے انسان تک پہنچتی ہے, اٹ ٹرنز انٹو ویلفیئر. پر پھر ایک جو کانسیپٹ جو بہت خوبصورت کانسیپٹ ہمارے پاس ہے کہ برنگ ایوری تھنگ بیک انٹو کمیونٹی. اور ہم یہ کیا دیکھتے ہیں مینٹل النیسز میں, کہ چاہے ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, سبسٹنس یوز ہے, اٹ ٹینڈس ٹو آئسولیٹ یو, آپ کو الگ کرتا جاتا ہے رشتوں سے, کمیونٹی سے, خدا سے, ہر چیز سے الگ کرتا جاتا ہے. اور اسلام ہر چیز کا نیم البدل کہہ رہا ہے کہ واپس آؤ, بیک ان کمیونٹی, کم ان بیک ان کمیونٹی. پر اس کے لیے ذمہ داری اتنی ہی کمیونٹی پہ ہے کہ وہ انسان واپس کیسے آئے گا, ریہیبلیٹیٹ کیسے ہوگا, انٹیگریٹ کیسے ہوگا, انکلوڈ کیسے ہوگا, وہ کمیونٹی کی بھی ذمہ داری ہے. بٹ اگین ایز اے ریلیجس ماڈل آپ کی ہر چیز جو ہے اٹ از اباؤٹ ویلنس, ہیلتھ, ویلفیئر, and then bring it back to community. And یہی میں اب یوز کروں گی کوپنگ سکلز کے لیے.
सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आइसोलेट नहीं होना है, ठीक है ना, क्योंकि आइसोलेशन में आपकी नेगेटिव थॉट्स बढ़ जाती हैं, जितना आपकी शेम, स्टिग्मास, ये सब डीप हो जाएगा और आप अलग होते चले जाएंगे। तो दो वेज में आपको अपनी सोशल सपोर्ट को समझना है। एक तो जो रोजाना मुझे सस्टेन करे, मेरे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, फ्रेंड्स हैं, फेथ लीडर्स हैं, दूसरे कम्युनिटी फ्रेंड्स हैं जिन पे मैं रिलाई कर सकूं। दैट्स योर डेली सोशल सपोर्ट हमें चाहिए। फिर हमें कुछ लोग ऐसे चाहिए जिन्हें हम क्राइसिस मोड में कॉल कर सकें। वो कौन होगा इंसान जिसको मैं क्राइसिस मोड में कॉल करूंगा? could it be therapist, could it be my doctor, could again it be मेरे कोई एक बहन भाई, मेरी कोई एक फ्रेंड। यू जस्ट नीड वन पर्सन जो उस मोमेंट पे, क्राइसिस के मोमेंट में आपके साथ रहे और आपको उस हम्प से गुजारे, वो जो एक क्रेविंग का पीरियड है उससे गुजार दे, कि आप रिलैप्स करने की बजाय यू सस्टेन। सो ये आप लोगों को ये इस तरह अप्रोच करना पड़ेगा। डाइवर्जन्स, ठीक है ना, हम देखते हैं कि ये जो क्रेविंग्स हैं ये बहुत बुरी क्रेविंग्स होती हैं। लाइक आपको दिखाया उसमें मॉडल में कि आपका रिवॉर्ड सिस्टम इतना जैसे चीख रहा है कि गिव मी डोपामीन, गिव मी डोपामीन, और जो आपका सोचने वाला दिमाग है, सोच समझ वाला, वो काम करना छोड़ देता है, राइट? आपका ये क्रेविंग इतनी बढ़ जाती है तो आपके रिलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात ये जो हमने देखी कि अगर किसी तरीके से आप अपना फोकस किसी और चीज पे ले आए तो 1 घंटा लगता है इस कश्मकश में, पर वो घंटा आहिस्ता आहिस्ता ये क्रेविंग्स कम होती जाती हैं। मैं बहुत सुसाइड प्रिवेंशन पे काम करती हूँ। सो इंटरेस्टिंगली व्हाट वी सी कि सुसाइडल आइडिएशंस तो 30 सेकेंड, अगर आपको कोई आपसे बात करे, आपका ध्यान पलट जाए 30 सेकेंड, तो वो इम्पल्स चली जाती है। पर जाहिर है एडिक्शन इज हार्ड टू फाइट, तो 1 घंटा आपको एटलीस्ट लगता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता क्रेविंग्स खत्म हो जाती हैं। बट इम्पॉर्टेंट पीसेस के खत्म हो सकती हैं। दैट्स व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन। अब उस 1 घंटे के लिए जो चीज आप कर सकें, एक्सरसाइज है, किसी से बात करना है, नमाज पढ़नी है, कुरान शरीफ पढ़ना है, मेडिटेशन करनी है, कहीं फ्रेंड्स में चले जाना है, पेंटिंग है, रीडिंग है, म्यूजिक सुनना है, कोई पेट्स हैं अगर आपके पास, बर्ड्स रखते हैं लोग, फिश एक्वेरियम रखते हैं, कोई भी चीज जो आपका ध्यान बटा दे 1 घंटे के लिए, वो एक जो आपका वीक टाइम है उससे आपको गुजार दे। फिर हम देखते हैं कि नई चीजें करना, इट्स लाइक जैसे हम कहते हैं ना, मसल बिल्ड करो, अपने अंदर नए मसल्स बिल्ड करो, इस तरह हम कहते हैं कि, या एक तरीके से एक ये समझें कि आप अपनी विल पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसमें अगेन बड़ा अच्छा, मैं अभी ये कॉन्सेप्ट डेवलप कर रही हूँ, आई वाज राइटिंग अबाउट इट, कि देखें हमारा हार्ट में जो हम क्या होता है कि जब आपको हार्ट अटैक होता है, वो क्यों होता है कि आपकी मेन ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है हार्ट को। बट इंटरेस्टिंगली अगर वो पहला हार्ट अटैक आपका गुजर जाए, आपकी डेथ ना हो, तो फिर हार्ट में कैपेसिटी है कि वो कोलेट्रल छोटे छोटे चैनल्स बना लेता है जिससे उसका काम चलता रहता है। इसी तरह हमें कोलेटरल रिलेशनशिप्स बनाने की जरूरत है। अगर किसी के इत्तेफाक की बात है, माँ बाप अवेलेबल नहीं है, या इंतकाल हो गया है, या आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, आपकी अपने बहन भाइयों से रिलेशनशिप नहीं है, या कोई भी मसाइल हैं, डिवोर्स हो गई, आप अकेले हैं किसी भी वजह से, डेथ हो गई स्पाउस की, what are you gonna be your collateral relationships? कौन है वो लोग? हम कहते हैं ना, यहाँ अमेरिका में सब कहते हैं फाइंड योर ट्राइब, कि कौन है वो लोग जो आपको समझेंगे, जो आपके वक्त पे काम आएंगे। फाइंडिंग दोज रिलेशनशिप एंड स्ट्रेंथनिंग देम। और अगर एडिक्शन की वजह से आपकी अपनी पुरानी रिलेशनशिप्स टूट गई हैं, उन्हें दोबारा जोड़ें। लर्निंग अ न्यू स्किल, अगर कभी पेंटिंग नहीं की, वी आर नाउ सीइंग के आर्ट थेरेपी में आपके ब्रेन के कनेक्शंस दोबारा बिल्ड होने लगते हैं।
वेरी इंपॉर्टेंट, पियानो बजाना सीखना। चलें हम रिसोर्सेस कम है हमारे पास, लेकिन पेपर पेंसिल लेके लिखना, बैठ के लिखें, अपनी सोचें लिखें। इट डजंट हैव टू बी कि आप बहुत कोई कीमती हैबिट अपनाएं। यू कैन डू समथिंग स्मॉल, गाना साथ में, चाहे आवाज है या नहीं, गाना गाना या कोई भी, मतलब पॉजिटिव थिंग, ठीक है ना। कभी कभी पुरानी जगह से मूव करना, कोई नया जॉब शुरू करना, नए लोगों से मिलना, ये भी बड़ा जरूरी है कि हम वो पहचाने कि वो हम क्यों फर्स्ट इन द फर्स्ट सिचुएशन व्हाई डिड वी स्टार्टेड यूजिंग, ठीक है ना। क्या वो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, कौन से दोस्त थे जो इन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया, कौन सी जगहें थी, कौन सी पार्टीज थी जिसमें जाके मैं यूज कर रहा था, क्या वो जॉब स्ट्रेसफुल था जिसकी वजह से मैंने यूज किया। वट एवर द रीजन, यू हैव टू refocus and move away from that. प्रिवेंशन, जाहिर है क्या है कि क्या रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने पहले यूज किया, क्या मैं उन्हें अवॉइड कर सकता हूँ। रिस्की सिचुएशंस, या मैं जब थका हुआ होता हूँ तो मैं यूज करता हूँ, हाउ कैन वी अवॉइड दैट। या मैं जॉब के स्ट्रेस में यूज करता हूँ, या बीवी या हस्बैंड से झगड़ा होता है तो यूज करता हूँ। एंड मेक श्योर कि आप अंडरस्टैंड करें कि ये सिर्फ एडिक्शन आदमियों में नहीं है, हमारी पास वुमेन इज एज वेल एज अफेक्टेड, बल्कि कहीं कहीं किसी किसी सब्सटेंसेस में औरतें ज्यादा हाईली इम्पैक्टेड हैं। तो इसलिए प्लीज मेक श्योर कि हम उस मॉडल से भी हट जाएं। पर इन द एंड सिंपल थिंग इज ईटिंग हेल्दी, स्लीप का ख्याल रखें, चाहे थोड़ी देर की सही, 10-15 मिनट एक्सरसाइज करें, टाइम लें। इस वक्त मैं सुन रही थी लेक्चर एतकाफ का कि प्रॉफिट तक कहते थे कि टाइम निकालो जिंदगी से, अपनी हर कमिटमेंट से टाइम निकालो, खामोशी में बैठो, मेडिटेट करो। सो व्हाट कैन वी डू टू इम्प्रूव आवर हेल्थ। अगर कोई अदर हेल्थ इश्यूज हैं, पेन है, हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, जिसकी वजह से हम डिस्करेज फील करते हैं, थका हुआ फील करते हैं, एंड वी गो टू अनहेल्दी थिंग्स, वो आप जाएं, डॉक्टर से कनेक्ट करें। if faith is something that helps you, then go and connect to your faith. So being in faith, of course we have talked enough about कि एक चीज जो बीइंग इन फेथ में, अगर इफ यू आर अ पर्सन ऑफ फेथ और आपका अच्छा एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस है विद रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, देन बीइंग इन फेथ में एक ये भी होता है कि आपको, अगर आप बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हैं, बहुत परेशान फील कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि यू नो देयर इज अ हायर पावर टेकिंग केयर ऑफ मी। वरना क्या होता है, हम बहुत कंट्रोल फील करते हैं कि भाई पैसे नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं फेलियर हूँ, kind of giving up those feelings कि नहीं, there is a God taking care of me and अल्लाह मदद करेगा। ये सब चीजें बड़ी encouraging, बड़ी hopeful messages हैं। We know this addiction cycle, so कहीं भी किसी point पे enter होके इसको रोका जा सकता है। Again, as a mental health provider, I can't emphasize enough कि stress management बहुत 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 ज़रूरी है। अपना finding what are your triggers, क्यों आप stress हो रहा है, is it बच्चे, is it family, is it money, is it पर आप एक बात याद रखिएगा कि ये सब चीज़ें रियल हैं, स्ट्राइफ रियल है हमारी ज़िंदगी की। लेकिन अगर जब आप इस तरफ जाते हैं, एडिक्शन की तरफ जाते हैं, that's a short-term solution, but it actually is compounding your problems. वो आपके मसले बढ़ा रहा है वो, और ये जो भी आपके इनिशियल मसले थे उन सबको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देगा। So few things we do: deep breathing, journaling. Deep breathing, हमने ये चीज़ देखी है कि जब भी आप एंशियस हैं, स्ट्रेस हैं, आप बहुत सुपरफिशली ब्रीथ करते हैं, और ये सबसे बड़ी अल्लाह ने हमें नेमत जो दी है वो ब्रीदिंग की दी है। Just taking few seconds out of your time, few minutes, बैठें और सिर्फ डीपली ब्रीद इन करें और ब्रीद आउट करें, काउंट करें और just let go
with every breath let go. आप you would be amazed कि आप feel करेंगे कि आपकी body and muscles relax हो रहे हैं. आप ये मेरी बात देख लीजिएगा, जब भी आप anxious feel कर रहे हैं, you are not breathing properly. और ये जब आप deeply breathe करते हैं, it brings your stress out. गाइडेड इमेजरी है कि कितने भी मुश्किल हालात हों, थोड़ी देर को ब्रेक लें. जैसे अभी मैं डॉक्टर नोमान अशरफ को जोक कर रही थी कि वो हवाई का पीछे सीन उन्होंने लगाया हुआ था. हम मिशिगन में अभी तक ठंड में बैठे हैं, 2-3 दिन पहले अभी तक स्नो हो रही थी हमारे पास. सो गाइडेड इमेजरी इज के चलें हम हवाई में हैं तो नहीं, लेकिन वो इमेजिन किया थोड़ी देर को कि वो पीछे धूप है, हवाएं चल रही हैं, पानी है. You can take yourself to any place that is comforting for you, and it is very helpful. ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि जब आप ब्रीथ करें, सोचें, तो देखें जैसे वो स्नो गिर रही है. Just look at that figure and you will feel automatically, if you focus on something like this, कि you are relaxing. Again, reminder, just few things. मैंने सोचा कि ये इस तरह दूंगी तो आप लोगों को easy रहेगा. And with that, I would end.